जैसा कि मेरी पत्नी ने बोला, यश जी हमारे घर के बहुत ही अहम सदस्य हैं। हर डिसीजन में यही का हमारा साथ रहा है। थैंक यू। Thank you for your presence. It makes this day even better. And क्या बोलूं मैं? I want to thank you, Father, for being the guiding light for everyone in your workspace and specifically me. Thank you for shaping me and ensuring that I have a good character that helps me be a better person to this society. Also, I wish you all the best for the second half of this journey that we'll all be spending together a lot of time and पीछे पड़ों से और काम अच्छा होगा and hopefully we will have a wonderful time. और thank you mom for always being there for father and for all of us and helping me be the person I am today. I am truly grateful to be a part of this family and being the son to my lovely father and thank you all. Thank you. बेटी सबसे प्यारी होती है किसी भी फादर की, so thank you. Wow. So everybody knows how a person is supposed to be when they are working and how they are at home. हमने आपकी साइड की स्टोरी सुन ली, अब मैं आपको हमारी साइड की स्टोरी, ठीक है? So I've come from the family where everybody was sort of in this direction, where they were all engineers and very hardworking and very studious. So by default, I'm an engineer myself. And in this whole course of studying, there was one thing that my dad told me once. For your parents to give that to you in order to create a very safe place for you to grow. And he told me कि बेटा कुछ भी हो जाए कॉलेज में, केटी वेटी एंड ऑल ऑफ दैट, कुछ भी हो जाए तू लाइक यू मुझे आके बताना, ठीक है? इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील एंड वी विल फिगर इट आउट टुगेदर. In the sense you're not alone in whatever you're put in outside of the world, because we are there with you. And in that course of time, I think it was my third year, and I got a KT in my internal Viva, which was very shocking because I was really good. So I come home and I'm all crying, and I'm like, and I was so worried मैं पापा को कैसे बताऊंगी? तो ठीक है, I came and I told him ऐसा ऐसा है, और मैंने उनको बता दिया कि बट मेरा बहुत अच्छे से गया था, मेरे सब चीज़ अच्छे से हुई थी, even the external examiner said good to me, so I don't know अभी केटी कैसे हुई. He's like don't worry, we will figure it out. क्या है वापस से कर देंगे उसको, ठीक है? I didn't know what he did behind my back. I had no idea. But वो मेरे कॉलेज जा चुके हैं, उन्होंने मेरे प्रिंसिपल से बात कर चुकी हैं, and next thing I know is he comes and tells me that the teacher had a problem with you and she has acknowledged it and accepted it in front of the principal. So that wouldn't have happened अगर मैंने उनको जाके ये नहीं बताया. It would have been like हाँ कितनी मिल गए हैं, हम वापस से एग्जाम दे रहे हैं. But because he did that, because I went and told him by myself, I didn't wait for the results to like be like disclosed ऐसे, and he sorted it out for me without me having to tell him to do so. So that वो support होता है ना जो आप मांगते नहीं हो पर आपको indirectly तो मिल जाता है, आप पूछते नहीं हो उसके लिए. So that happened and that's been a constant pillar for me and my brother. That अगर कुछ हो जाए ना बस आप घर पे आके बता दो क्या हो गया है, बाकी पूरी दुनिया से जंग लड़ लेंगे. You don't have to worry. So the very famous saying that is be the change you want to see in the world, I have seen it in my house. I have seen it with my dad. I have seen it with my mom. It's very easy office में आके पूरा पूरा काम कर लो dedication के साथ, because there is somebody else at home taking care of the rest of the things. So it's a party of two that created all of this to have happened today, and all of y'all were a witness, y'all were testimonials to everything, and it just comes again, boils down to the upbringing of how they've been raised
as kids themselves, and now how we will shape future ahead. I don't know when, but yeah, hopefully. So whenever that happens, I know that that is how you will treat your kids as well, making sure that we are safe at home. It doesn't matter what happens outside. And all of the hard work, I've seen him. I was doing my MBA and he's studying for LLB. And I'm like, भाई मतलब मैं तो पढ़ रही हूँ, आपको भी पढ़ना है, अभी हो गया ना, अभी हो गया, आप काम कर रहे हो, इनको LLB भी करना है, इनको ये भी करना है, इनको वो भी करना है. And but secretly in my head, I'm like, I saw how he was studying. He makes notes. I don't know if everybody does that, but he makes notes. And it hit me. I also make notes. So I have gotten this from him. क्योंकि वो ऐसे पढ़ते थे, indirectly मैं भी ऐसे ही पढ़ती हूँ. मुझे notes बनाना है, मुझे अपनी handwriting में उसको read करना है, so that I remember it better. भी बनते हैं. So even though हम बचपन में कहते हैं कि मैं तो ऐसे बिल्कुल नहीं करूँगी, पापा तो चिल्लाएंगे, ये करेंगे, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. और अब हम वैसे ही बन चुके हैं कि I am also equally very particular about my things. My brother can also be very stringent about ये ऐसा है तो ये ऐसा ही होना चाहिए और इसे कैसे भी करके खत्म करो. One thing is, whatever you take at hand, any task, finish it. It will take time, but finish it. So that's something that Papa has always done. You know, I've seen him finish things. He's taken this, he's finished it. Something that I think we should all take back home with us. If you're starting something new, you know, finish it off. It's good. You will have that thing with yourself कि मैंने कोई चीज शुरू की थी और मैंने उसे खुद से खत्म किया है. But having said that, I'm so touched by everybody's speech. Like I was getting so emotional. मतलब लगा था मैं भी रोने वाली हूँ पूरे डे में. But इतना affection, इतना respect ना, बहुत सारे लोग आए होंगे, गए होंगे. This is a never-ending course of time. But very few people leave marks and, like they said, footprints. So it's really nice to be a part of this event, to be a part of this family, to be an offspring of this human being. Hopefully, I will carry forward this ahead. Like I said, we don't know when, but we will do it soon. And I'm so proud of my dad and my mom, and I'm so grateful that I've gotten this opportunity to witness it myself. So thank you so much. Right. So we should move on as we are running on late on time. And so I now invite Sri Satyanarayan sir to felicitate sir with the shawl and rally. Very aggressive and he is very particular in his work and he will motivate others also and he will monitor whatever work he has given to us and he repeatedly asks us and complete the work in time. He is the very greatest person in our office. Thank you, sir. Madam. Sir. Take this honor. It is a matter of honor and pleasure for me to read a citation of. So I read out the citation. Sri Prashant Patel sir. It is citation is signed by Sanjeev Kumar Vidwai, our DG Telecom. Sri Prashant R. Patel is a distinguished technocrat with an illustration career of over 37 years in telecommunication sector. In 96 UPSC qualified officers, he holds a degree in electronics engineering and a PG diploma in management from VNIT Nagpur, where he taught the university. He has also earned an MBA
Operation Marketing from IGNOU University, a PG diploma in Dr. Ambedkar Thought, and an LLB from Mumbai University. He began his career at Melbourne and Modi before joining the ITS cadre in the Department of Telecommunication. Starting from Rajkot as ADE, he contributed to exchange installations in rural Gujarat and played key roles in Vadodara's telecom infrastructure. While serving as DGM at MTNL Mira Road, Sri Patil ji received BSES Rotary Vocational Award in 1999 from Rotary Club Mumbai, Appreciation Award from Kriya Vaishik Foundation Andheri Mumbai in 2001, and Rotary International Vocational Excellence Award from Rotary Club of Mumbai in 2001, and Maharashtra Kala Nitiketan honored him with Maharashtra Gaurav Puraskar in 2006, recognizing his exceptional performance in telecom network maintenance. As DGM says, he was instrumental in establishing several CSAs at strategic locations in MTNL Mumbai. Promoted to SAJ, he served as GM Mobile and Transmission, implementing BTS expansion and the CMTS system. As CGM BBME Maharashtra, he led the successful BharatNet Phase 1, rollout connecting over 15,000 Gram Panchayats. He later served as DDG and CGM CNTX West, overseeing multi-state telecom operations. Internationally, he is trained in CDMA technology in Japan 2000, represented India at Asian Telco Expo in Singapore 2004, and completed an executive diploma from the George Washington University 2018. In his final posting here with us as Special DGP APLSA, he steered the unit to second rank Pan India in LSA performance. Under his leadership, 5G use case labs were commissioned on time, public awareness on Sanchar Sathi app was widely promoted, and key findings briefings including to Honorable Governor of Telangana were conducted. His keynote as ITU WTSA 2024 outreach at IIIT Hyderabad inspired students to explore telecom innovations. The Department of Telecommunications gratefully acknowledges Sri Prashant R. Patil invaluable contributions to DOT, BBNL, MTNL and society at large. His distinguished career reflects unwavering commitment and excellence in public service. The department extends its heartfelt wishes to Sri Prashant R. Patil and his family for a peaceful, healthy and fulfilling life post-superannuation. This is issued by Sanjeev Kumar Bidwai, Director General Telecom, New Delhi, 31st June. Sir, I would request all the officers from APLSA as well. So. And all the team who traveled on to Hyderabad. Thank you very much. And thank you all. I can't put in words. It is a celebration of a man who committed himself and gave himself to public service with sincerity, dignity and enduring grace. I am really proud of him. After serving for more than 35 years, 9 years in Indian telecom sector, today he is stepping down as Special DDG Telangana. AP that I never can pronounce that way. But I am really proud and I am really grateful for all of you who have put so much effort, and your love and affection is beyond words to explain. You have really touched my heart, and we are really blessed to have you people all. We never expected that this function will be in Hyderabad, but you made it really big and memorable. I am really thankful and really grateful for all the team who all made all the efforts to make us comfortable when we darshan or anything we wanted.
Everybody was so helpful, so kind. Thank you, Team Hyderabad. Really, very good. As many of you have shared that and experienced also that how he stood by you as a leader, mentor, or a friend. Always from there. And I think that is the only thing which lasts long after the professional periods are over. That is what we remember. Otherwise, formalities are always formalities. I am short of words, full of emotions. This is we have gathered here to honor him, and at the end of his services, all the hard work he has done. But it will be a memory which will always be cherished and remembered. We will remember you all the faces. Thank you for taking all the efforts and making it a grand success. So grateful. Thank you. Now, never cribbing about people, situation or resources. He simply gave his best every single day. I have seen him over the decades now, without getting tired, frustrated. Yes, he gets agitated when things are not done according to him. But his mission is to get the purpose solved or the issue to be resolved. For that moment he becomes upset, he is angry also. But otherwise he is very caring for all the people, as you already spoke about him. Whatever grudges I had in the beginning of my married life, today I feel that it was worth all the sacrifice to see and hear all these lovely comments and all your feedback. I am really proud of him. And I love you very. Thank you so much. My mother-in-law is not here today physically, but she will be blessed to see her son with so much love and affection completing his tenure with very dignity and grace. May our soul rest in peace. Thank you all for making this day even more memorable and special. Thank you. We have already arrived. I forget to mention during my speech, so I take apology for that. You see the iceberg, 1/3 floating, 2/3 remains below the water. She is beloved Bobby. A big round of applause. We have 5 brothers, 3 sisters, a big family. He is eldest, my brother is eldest mom. Binding a tied entire family in a knot with all. At the same time, unwavering support during his entire professional life, entire their personal life. We proud of him, Abhi. Fantastic. Thank you. Thank you once again, because unless and until you are not comfortable at your family front, you cannot deliver. You cannot deliver. So, a big round of applause. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Patil sir, I would now like to request you to say not a few words. Sir, we are always eager to listen to you whenever the chance comes in a meeting for you to speak. In the last 2 months, I tend to forget to give a chance for you to speak, sir. Now the time has come. Thank you, Samiksha. इतना थोड़ा इमोशनल कर दिया. Yeah.
What to speak and what not to. That is the question mark. Now, I don't know. I have reached to 60 years also. It's surprising. Rajesh and this Nitin and Sairaj and Jaipal, Sudhar, there. In fact, I've had them a lot in the work also. Still they are here. I don't know. Yeah. कहाँ से शुरू करेंगे समझ में आता. You want to listen also? Sonu, you spoke very well. I have seen you speaking so nice. Mike, you also did well. I think you all can say that it comes from India. So. Except Arvind Tiwari, it took a lot of time, isn't it? He talks much more about technical things because people may not be aware also. Security. Security means बाहर खड़ा हुआ security सोचेंगे. Security means what? बाहर खड़ा हुआ security. But yes, we are still standing out as a DOT to save our citizens of country. But people should understand what security is. Come. You are still welcome. Come. You are written. Whatever she has written, she didn't speak also. It seems. ये जो 60 साल तक पहुंचने का जो सफर है, ये जर्नी जो है, without your love and affection, it cannot be completed. Major role played before marriage, of course, my dad, mom. I really married mummy. We are missing her, and she touched my brothers. Or after marriage, the role my wife has played in my family, that is, you cannot imagine. She has suffered a lot because of a different work. Because I think I am not just because of my father and mother. I feel I am for the society too. Because in society I got everything, and because of society, I represent society, I feel so. So I had to pay back to society by this or that way. That was my motto, and still it will be there in future till my death. But she has given a lot of support. She has suffered also. But without her support, nobody can come forward. Simple. Life में ups and downs होते रहते हैं. If I begin from my marriage, before marriage also we were friends for 7 years. और उसमें अहम भूमिका अगर somebody has played the role in our marriage is my maternal uncle मामा जी Mr. T.M. Chowdhury. He met our बाबूजी, उनको मिल के आए थे. तो सबका कितना बड़ा हार्ट था. बाबूजी also accepted. वो सब मतलब बड़ा. We are in intercaste marriage. उसके बाद इतना सब अच्छा सब चीजें चली. You have to balance ultimately. Everywhere you have to balance. ऑफिस में, घर में, बाहर, सब जगह बैलेंसिंग एक्ट वी हैव टू लर्न. दैट आई हैव लर्न सो लेट. कोई बात नहीं, सीख तो लिया आदमी ने. अल्टीमेटली व्हाट शुड बी योर एम ऑफ लाइफ? व्हाट इज योर एम ऑफ लाइफ? हमारे माँ बाप ने हमको पैदा किया, हमने हमारे बच्चों को पैदा किया, बाद में हम मर गए, ये एम ऑफ लाइफ नहीं होना है. वो तो नेचुरल कुत्ते बिल्ली भी जीते हो जिंदगी, वो भी करते हैं. Your aim of life, you should be a good human being. ये मैंने ये जो रीता पाटिल उससे सीखा. Good human being. Work for others. वो तो इतनी दानशूर भी बहुत है हमारी मैडम. मुझे लगता है इतना मत क्या करो. You to give, unless you will not get. So that characteristic, that property I have learned from her. Her major role we cannot ignore. बाकी तो डेफिनेटली हमारे डैडी ने, पिताजी ने हमको बहुत तकलीफ दी. ऐसा हमको तब लगता था. 5th स्टैंडर्ड में मैं छोटे 5 वर्ष तक क्या खोला था, 5 वर्ष. तो 4 बजे उठा के 5 बजे he asking us to get up and learn English and study. And he was also sitting beside us reading some newspaper. Look at him.
So education is important because nothing was there in our hand. Only education, education, education. That is important. That is must. वो उन्होंने हमारे में ओलंपिक कैलकुलेट किया. उन्होंने हमारे मम्मी की सर्विस भी छोड़ दी थी. She was teacher. Just because she should take care of the children. Around 5 + 3 8. ये इतना सब इनको संभालते हुए बाबा ने बहुत अच्छा उनका जो कैरेक्टरिस्टिक जो है मैंने जो रोल प्ले किया है दैट इज मतलब बिकॉज ऑफ हिम वी आर हियर एट दिस पोजीशन. इसमें कोई दो बात नहीं है. देयर इज नो डाउट एज सच. अभी बिकॉज नॉर्मली पीपल टॉक अबाउट टेक्निकल थिंग. अभी मैंने ऐसा किया मैंने वैसा किया. यू हैव सीन दैट एवी. मुझे भी यहाँ हुआ तो सरप्राइज भी इतना जबरदस्त किसने बनाया यार ये. मैं तो फोटो काट दिए थे उनको सब. The major role played by our Sampath and Raghav Reddy. Today he is not here. And Shiva, where is Shiva? Come Shiva, come here. Oh, is that Shiva? Chota Shiva. This fellow, he has played a major role in preparing this AV. All preparation. ये पूरा हफ्ता ये लोग काम करते रहे. इसको मिक्सिंग करना ऑडियो को वीडियो के साथ में. That is people have done. Thank you very much Shiva. Thank you very much. और मुझे भी लगा कि इतना अच्छा बन गया. और संपत और इसकी जो आइडिया द कंसेप्ट हैज कम फ्रॉम सत्यनारायण. बिकॉज़ व्हेन यू आर गिविंग एनी प्रेजेंटेशन तो स्लाइड्स आर गोइंग एंड समबडी इज टॉकिंग. तीसरा समबडी इज टॉकिंग व्हाई दैट slide itself also everybody has appreciated that because with the slide that audio goes no it looks so nice and hearing also you feel better. तो उसके लिए all credit goes to सत्यनारायण and his team. और मुझे जो प्यार और लव एंड अफेक्शन आई गॉट इट फ्रॉम दिस यूनिट उसको मैं कहीं भी तोड़ नहीं है. दिस इज आई कैन नॉट कंपेयर. ये एंटायर टीम. हमें किसका नाम लूंगा. हमारे हेमंत राठौर है, आनंद कुमार है, सत्यनारायण जी है, हमारे वो आया सर अभी चले गए वो बात अलग है. इज अ डीडीजी रूलर. और ऑल एडीजीज डायरेक्टर्स अरविंद Suresh Reddy, he has transferred, he has gone back to Northeast. Prashant Taglekar, he has come from Mumbai along with me. Shravan Kumar, I think his wife is not well, that's why he is not here. All LDGs. Anand Kumari, she doesn't know Hindi but she smiles in Hindi. Nambi, she has wonderfully, she spoke, I think she was the first, is not her, she started. People are there, they don't know Hindi. Sanjay, they don't know Hindi. I have asked them to learn Hindi. And he is learning. And I am learning Telugu. Viru bhojan mein kaise na raha, utna to aata hai. Idi Telugu, idi pustaku, viru padiki veltunnaru. Manchidi. I have purchased books also. I thought if I had come over here, so why not to learn Telugu? It's an opportunity for me. But बाद में फिर वो इतना कठिन है नहीं जमा और किताब से बाजू में रहे. But मैं और हमारी श्रीदेवी क्या है? She talks in Telugu, I talk in Hindi. हाँ बड़ा पर फिर भी चाय तो बराबर चाय आता है. That was a great मतलब वो जो इक्वेशन बन गया उनके सामने. बट वंडरफुल थी. आप सभी लोग इतने अच्छे हो और मुझे आपने जितना प्यार और मोहब्बत. शिवा ये ही इज जस्ट नथिंग बट राइट हैंड टू मी. कुछ भी काम दो. बादशाह ये टेक्निकल एक्सपर्ट है और सबसे ज्यादा अगर डांट खाई में तो हमारा रमैया बिकॉज मेरे बगल में बैठता है भाई साहब. और प्यार और मोहब्बत आई कैन नॉट फॉरगेट सभी लोगों से. आपने आई डोंट नो वेदर आपने इतने सारे एडजेक्टिव इसमें लगाए. वो लीडरशिप पता नहीं मैं इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं आप लोग. सो मेनी एडजेक्टिव आई डोंट नो वेदर आई रियली स्टैंड फॉर दैट और व्हाट. आई ट्राई टू रीच टू दैट लेवल. हो सकता है मैंने आपको कभी हर्ट किया हो बात करते समय. आई माइट हैव हर्ट यू. बट इट इज नॉट अ प्रशांत पाटिल. इट इज अ चेयर टॉक्स टू यू. प्रशांत पाटिल इज अ फ्रेंड. When you go out, हम तो गले लगाते हैं. पटरी पे चाय साथ में मिलके पीते हैं. I like. I meet all your even outsourced people. Outsource हमारे जो भी स्टाफ था, used to go to them, talk to them. They are also human beings.
तो आप हम मैंने नहीं, ये सब आप लोगों से जो मुझे प्यार मोहब्बत मिली वो मैं इसको मैं एक भुला नहीं सकता। और that definitely I will cherish these memories with me. Just regarding APLSA, specifically last 7 months, 8 months, 9 months, उसके पहले जो मैंने काम किया है CGM कोर नेटवर्क मुंबई में 5 states were with me, वहाँ भी इतना रिस्पेक्ट लोगों ने दिया। बट योर वर्क स्टॉप, अगर आप काम नहीं करेंगे नोबडी लुक एट यू, हैव टू वर्क। 5 स्टेट को संभालना, आई वाज एक्चुअली ऑन टू, तरफ समय नहीं होता था, बट आई एंजॉयड दैट वर्क, आई एंजॉयड माय स्ट्रेस आल्सो, दैट एंजॉय द हैप्पीनेस मस्ट कम व्हेन व्हाट एवर यू डू। आप कुछ भी करते हो, अगर हैप्पीनेस नहीं आता है यू कैन नॉट परफॉर्म। इफ यू वांट टू परफॉर्म, हैप्पीनेस हैज टू बी। ये मैंने वहाँ पे मैंने सीखा। तब मैडम को भी काफी मजा आया था, वहाँ पे स्टडी का होता था, वुमेन्स एसोसिएशन होती थी वहाँ पे, दे वर सो नाइस। आई रियली एंजॉयड दोस डेज इन मुंबई एज ए CGM कोर नेटवर्क। Prior to that, I was DDJ admin in Ahmedabad. वहाँ पे I spent 1.5 years. There also we worked very hard and we enjoyed. Prior to that, I was CGM DBNL, as you have heard about, Chief General Manager, Bharat Broadband Network Limited. That was the task of providing internet connectivity to all Gram Panchayats, 15,000 Gram Panchayats. Out of that, somebody was telling here, we have reached 10,000 Gram Panchayats. Which were working actually. So the humorous, huge task. And that satisfaction you get, no, you are connecting something for the sake of people of country. The getting service, that satisfaction is too much. It is not only bread and butter. हम सिर्फ खाने के लिए नहीं कमाते हैं, किसी और को अगर satisfaction होता है, nothing like that. वो मुझे बहुत enjoy किया. That BBNL has given me a chance to go to US. That I2P2 का कोर्स हमने किया था. I was at Washington for 1 week. Madam was also there with me for 1 week. We visited. That was an opportunity. So it is a, I cannot forget that. Prior to BBNL, I was in MTNL as a GM mobile and GM transmission. मुझे कुछ भी नहीं आता था मोबाइल वगैरह, ये इन्हीं से सीखा मैं। GM transmission is a very important task, connecting all exchanges. I learned from Rajesh Luhakar. They are expert in transmission. But काम मैंने बहुत करवाया है, and मतलब और रियली आई वाज वेरी, मतलब मैं बहुत टास्क मास्टर था, फायर भी करता था काम के लिए, बिकॉज वी आर बीइंग पेड फॉर दैट एंड वी आर वर्किंग फॉर नेशन। आप कोई सर्किट अगर बंद है, किसी का डायल टोन नहीं आ रहा है, ही इज इन प्रॉब्लम, उसे घर में बीमार हो सकता है, मे बी समबडी, मे बी किसी का इंटरव्यू कॉल आ सकता है, नोबडी नोस, वी हैव टू प्रोवाइड देम सर्विस। इसलिए पीछे पड़ता था, इतने पीपी प्रशांत पाटिल का पीपी उन्होंने पीछे पड़ो कर दिया। अभी भी मेरा नाम लेके आप बोलेंगे तो काम अभी भी हो सकता है, कोशिश करके देखो एक बार। बट यस, MTN has given too much. मैं वहाँ पे 15 years I was in MTN. That was a tremendous work, और I enjoyed that work because earlier to that I was in Gujarat, वडोदरा, जो वडोदरा बोलता था वो, वडोदरा actually. I spent my 7 years of my life as a division engineer. मैंने बहुत ही हार्ड टास्क पार्टनर अंडर काम किया है। मिस्टर रणवीर सिंह was firing like, he was throwing file like this. File, अभी तो कोई नहीं करता है। So I worked under him and I learned a lot from him. How to fire. That is negative, but that is also sometimes you have to apply that thing if you are working this thing. It's not only pampering. We have to, if somebody is not working, we have to take him on the task. तो वो जो मेरे 7 years वडोदरा के हमारे गए, I was division engineer, very young, and हम लोग 8-9 बजे रात को घर पहुंचे थे। इतना केबल फॉल्ट होगा, this and that we were attending. That I enjoyed. She was the sufferer. मैं तभी वहाँ पे काफी सोच काम करता था। She was the sufferer. इसमें कोई शक नहीं है। I still feel कि मैंने ऐसा नहीं करना था, but now gone those days. But we are compensating nowadays. I am so thankful to Rita. You have really helped me in this matter. That's why Rajesh was telling, no, because when I can work because of her support. That is always there. Again, you have to have balancing act. Nitin Mane was also under my control. I was BGM, ये GM transmission. हम कहीं स्क्रैपिंग कमेटी वहाँ गए थे, मैंने चलो लेट अस हैव फूड आउटसाइड बिकॉज़ वी आर आउट।
तो उनको ऐसा लगा जेल में से खाना खा रहा है, ये जेल में से खाना खा रहा है। ही वाज सो थ्रिल्ड। नितिन मुझे बता रहा सर मुझे आंखों मेरे हाथ में कांटे आ गए, गुस्बम्प खड़े हुए। बट आई नेवर फेल्ट लाइक दैट कोई एसडी है, कोई लाइनमैन है, कोई दिस एंड दैट इज स्टिल आई एम कंटिन्यूइंग बिकॉज़ आई लुक इट टू दिस गाइज एज अ ह्यूमन बीइंग ओनली। उनको भी दो पैर है, हमको भी दो पैर है। So let us not discriminate on that angle. I always feel like that. But of course, when you are in office, you are office. You are a boss. You have to follow some rules and regulations. उससे पहले मैं एडीटी था राजकोट में, जस्ट ज्वाइन करने के पहले। बाद में उसके पहले because when I appeared in exam in 86, 2 साल लगते हैं for getting appointment. In these 2 years, I worked in Meltron, Maharashtra Electronics Corporation Limited. It was a basic electronic work was there. RCD, Radio Communication Division. They were manufacturing walkie-talkie. So I was checking transmission card into that. मैं बाद में GM transmission बनना, that is different issue. वो transmission card में if you have to check up with electronic circuit, so capacitor is always open, but we found that it is a short also. Resistance is never open, but we found here resistance can be open inside. So इस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक काम जो हमने वहाँ पे जो सीखने को मिला मेल्ट्रॉन में। Then subsequently I joined NEERI, National Environmental Engineering Research Institute. It is under CSIR, Central Government. वहाँ पे because instrumentation का पोस्ट था, I was a scientist B, class 1 पोस्ट। अच्छा था, कोई काम नहीं था, instrumentation को maintain करो this and that. I could have become PhD also, but I would have continued there itself. But then incidentally UPSC का रिजल्ट आया, मामा बोला चलो चले भाई आप। तब उधर आए एडीटी वर्क से बने, but we enjoyed as a ADT, DET, we enjoyed work, everything. We enjoyed firing, we enjoyed customer का गुस्सा भी we enjoyed. Union बाजी, जिंदाबाद मुर्दाबाद, everything happened. That all we have to learn from them. All aspects. These all events are giving you something to learn. मैंने इससे बहुत सीखा, और आज जो आपने मुझे जो इतना मान सम्मान दिया, इसका मैं हकदार हूँ या नहीं, I don't know. I really don't know. I was never thinking ऐसा कुछ होगा. Even today we heard in our VC conference also. It is surprising. But I think when you work, it will be paid back to you. That is what exactly happened. आप सब लोगों का मान सम्मान मैं कभी भी नहीं भूलेगा. I will cherish this memory in my life forever. I will remember you all the time. Whether you remember me or not, but I am going to remember. जब footprints की बात करते हैं आप लोग, let me see whether footprints will be there or not. Tomorrow if I will call Satish, yes sir, who is there? सर भाई मैं पाटिल, कौन पाटिल? Anand Kumari she doesn't know Hindi, she will go, sir I don't know Hindi, you talk in Telugu. But anyway, let us, I think since 2-3 hours we are sitting together and you are in trouble. No. Absolutely. हमारे बादशाह है, शिवा है, कोमली है, कोमली ने पर डांट खाई थी मेरी, वो नागलक्ष्मी मैडम है, she does all sweeping and other things. मतलब मैं सबका नाम से भी जानने लगा मैं यहाँ पे. हमारा ड्राइवर है, ड्राइवर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ट्रीट देम एज ह्यूमन. और सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर यहाँ पे किसी ने प्ले किया तो मेरा यादगिरी करके हैं, वो भाई साहब अभी तो इधर नहीं है, इधर आके जाते कम इन. He is the man who has really done so much work for me, so much respect, so much love. आप इधर आ जाइए, let my daddy also see you. He is यादगिरी, he will याद करेंगे आप. He is loud applause to you. He is the man. He is a caretaker, just a caretaker, and he is really taking care of everybody. इतना अच्छा इंसान मैंने नहीं देखा मतलब. और हमको इंसान को इंसान से देखना चाहिए. आई एम सो थैंकफुल टू यादगिरी जी. और इस हमारे इस जर्नी में अगर मैंने किसी का दिल दुखाया तो आई एम सो, यू प्लीज फॉरगिव मी. Forgiveness is very very important aspect, because in our journey of life you may hurt somebody by way of talking, by way of any words,
You might have got also hurt from somebody else. So let us think of forgiveness. That also it has come from Rita only, my wife. If you forgive others for their deeds, whatever they have done for against you, you might have heard. हम 25 साल पहले मुझे उसने ऐसा बोला था, 25 years back. 20 साल पहले मेरी ननद ने ऐसे बोला, मेरे भाभी ने ऐसे बोला. हम वो लेके चलते, we are carrying and we are getting knocked with that fellow, and you cannot sleep very calmly and quietly. You just forgive that fellow and seek forgiveness at the same time when you are hurting somebody else. At times you are hurting, yeah. उसके लिए बहुत बड़ा दिल, you have to have big heart. इतना इजी नहीं है किसको सॉरी बोलना. मैं क्यों बोलूं सॉरी? ये हमारा एटीट्यूड होता है. Seek forgiveness. Then and only you can sit calmly. You can sleep calmly. आपका लाइफ इतना मस्त हो जाएगा. This is what I have learned and really उसके बाद I'm telling you, मेरे मन में किसी के बारे में कुछ भी ग्रज नहीं होता है. इसलिए वो गौतम बुद्धा के धम्मपद में लिखा हुआ है कि हेट्रिज्म कैन नॉट बी वन बाय हेट्रिज्म. मतलब द्वेष करने से द्वेष नष्ट नहीं हो सकता है. उसके लिए प्यार और मोहब्बत की आवश्यकता होती है. कंपैशन, लव एंड अफेक्शन. तो ये दोस्तों हमको सीखना चाहिए. ये मेरे कुछ मतलब ऐसा लगता है कि आप लोगों ने सीखना चाहिए. इट इज अप टू यू. यू हैव गॉट 2 years. यहाँ से इधर से दूर आप सुनो, छोड़ सकते हैं या ले सकते हैं. दैट इज अप टू यू. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने लिखा था कि मैं ऐसा ऐसा बोलूंगा, वैसा करूंगा. वैसा होता नहीं. अब मैडम को ही बोलना था, उसे जो लिखा था वो तो बोला ही नहीं, कुछ दूसरा ही बोलने चलेगी. शी हैज स्टिल चांस. Because forum is open and there is no cap on it, no time. You can go on talking. This is last day है, बोलने दो यार. कल तो तुम बोलेंगे who are you? और फिर मैं एक प्रश्न पढ़ लेता है, पहले स्पेशल विजिट था. अच्छा सर, अच्छा ठीक है. As a sign off, I take with me memories, the friendship and the satisfaction of having contributed to one of the India's most transformational sector. I may be retiring from service, but not from the relationships and the spirit of telecom. In this journey, I may have hurted, knowingly or unknowingly. Please forgive me for that, my deeds. That is what I said. It was never Prashant Patil. It was the chair which was talking to you in my service life. So let us stay in touch, not on the same network, but slightly different frequency. Frequency is going to be changed. Network might be different. तो एक हिंदी में कविता मैंने दोपहर में बोली थी. आपके पता नहीं, जो भी हिंदी समझेंगे. चलते चलते ये मुकाम आ गया. रिटायर हो ना, मैं रिटायर होने वाला हूँ. लगता है मुझे अभी भी फील नहीं होता रिटायर होगा. मुझे भी कलर करके आया था मैं. और हमारे संजीव बोला साहब मुझे ये रहने तो थोड़ा वाइट दिखना चाहिए, लगना चाहिए आप रिटायर होने करके. और बात तुम्हारी सही थी, फिर मैंने कलर करके आया. कोरोना काल में मैंने कलर नहीं करके देखा था, मतलब बहुत बुढ़ा दिखता हूँ. फोटो भी रखे हम लोगों ने. तो चलते चलते ये मुकाम आ गया. हर लम्हा जैसे एक पैगाम आ गया. रिश्तों की डोर थी, जिम्मेदारियां भी थी. रिश्तों की डोर थी, जिम्मेदारियां भी थी. अब पीछे मुड़कर देखता हूं, एक कहानी सी लगती है. I see इतना 37 years plus 2 years, 39 years. ये सब फटाफट चला गया लगता है. Blink of, and you have to summarize these 4 decades in a few minutes. It looks like funny thing. मतलब कुछ मिनट में आप 4 decades के बारे में बात करना है. फिर भी मैं I have taken that stand. कभी थे तारों में उलझे. तारों मतलब केबल. It is related to telecom basically. कभी थे तारों में उलझे, कभी नेटवर्क की दौड़ में, कभी गांवों की गलियां में, तो कभी शहर की भीड़ में. हर ठहराव एक सिखावन बन गया. हर कठिनाई एक अनुभव बन गया. साथियों की मुस्कान थी,
साथ था अपार, साथियों की मुस्कान थी, साथ था अपार, कभी डांट कभी सलाह, सब कुछ था खास। जो मिला इस सफर में वो अनमोल खजाना है, जो मिला इस सफर में वो अनमोल खजाना है। इन यादों को अब उम्र भर निभाना है, इन यादों को अब उम्र भर निभाना है। न कोई गिला है न कोई शिकायत, अब मुझे किसी से कोई शिकायत भी नहीं है, न कोई गिला है, न कोई गिला है न कोई शिकायत, दिल में है बस कृतज्ञता और अपना याद। जो मिला जितना भी मिला बहुत है, जो मिला जितना भी मिला बहुत है। अब विदा की घड़ी आई है तो बस यही संदेश है, रुकूंगा नहीं थमूंगा नहीं और अब रास्ता नया होगा। संदेश ये है कि रुकूंगा नहीं थमूंगा नहीं पर अब रास्ता नया है, पर रास्ता नया होगा। यह अंत नहीं एक नई शुरुआत का सिलसिला होगा, यह अंत नहीं एक नई शुरुआत का सिलसिला होगा। दिल से जुड़ा रहूंगा, दूरियों से क्या फर्क पड़ता है, दिल से जुड़ा रहूंगा, दूरियों से क्या फर्क पड़ता है। जहां अपनापन हो वही असल में घर हो, वही असल में, यही मेरा घर है। यहीं से टेलीकॉम से मेरी शुरुआत की, टेलीकॉम मेरी खत्म हो रही है, मेरी शुरुआत सर्विस की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस है। बाकी अभी बहुत सारा काम, बहुत सारे it's open to sky, so many things we can still do. I am so thankful to you, I am so grateful to you, I love you all. Specifically मेरे father-in-law यहाँ पे आए, he could not utter a word, but it spoke like anything. मेरे डैडी as usual, you have heard him. मेरे brother-in-law, मेरी संध्या श्रीवास्तव, उनकी वाइफ बात नहीं कर पाए, but उनके इमोशंस it reached to me. मामा ने बताया वैसे जो स्टोरी हमारी थी, राजू और मेरा पवन, मेरे 5 भाई हैं, मेरे 4 भाई हैं, मतलब मैं पांचों पकड़ रहा हूँ। आज भी अभी भी मैं अगर बोलूंगा मेरे पैर दबाते, अभी पैर दबा देते हैं, अभी भी। नॉट ओनली ब्रदर्स, ये मेरे ब्रदर बैठे संजीव श्रीवास्तव, वो मेरा पैर दबाता है। ये हमारे इमोशंस और लव एंड अफेक्शन के साथ। अब और क्या बोलूं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आप लोगों को कुछ गलती हुई तो माफ कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। क्या बोल रहे हैं? समीक्षा पीछे पर, तभी तो पीछे मुड़ को देखता हूँ, कहानी से लग के बोला ना मैंने, पीछे मुड़ा था हमने। समीक्षा ये मेरी बेटी है, मैं उसको रूम में चला गया, एक बार दीदी आई थी, मैं उसको तो मिला देता हूँ। तो she was having her lunch, मैंने मुलाकात कर दी। बाद में जो इतनी डांट दिलाई निधि ने कि आप अच्छे डायरेक्ट कैसे रूम में घुस गए। She is a एकदम स्वीट गर्ल, always laughing, उससे भी डांट खाई है। डांट किसी नहीं खाई है। बट यस, आपका मैं अपनापन कभी भी नहीं भूल नहीं सकता। मुझे सुबह हेमंत का कॉल आता है, सर ऐसे ही कॉल करता हूँ, करेंगे कॉल, हेमंत सर आज फ्री है क्या है। बहुत वो अपनापन जो है, जो अभी हमारे सत्यनारायण जी बताया है जो चीजें, बिकॉज आई एम लर्निंग फ्रॉम यू एट द सेम टाइम। आई एम लर्निंग फ्रॉम शिवा, आई एम लर्निंग फ्रॉम रमैया, आई एम लर्निंग फ्रॉम नागलक्ष्मी, आई एम लर्निंग फ्रॉम कोमली। यू हैव टू लर्न फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्सन। ऐसा नहीं कि यू आर द ओनली बेस्ट, नो वन इज बेस्ट। We have to learn day by day, every moment you have to learn। और आप सबके साथ से ही हम लोग सेकंड जो रैंक हमने लाया है, आपने जो मेहनत की इसके वजह से, हो सकता है इस साल हमको फर्स्ट रैंक मिल जाएगा, आपकी लगन से, आपकी मेहनत से। अभी आज हम आपसे जुदा हो जाएंगे, वो 5:30 6 बजे तो आउट हो गया था, मैं 6 बजे आउट हो गया था ना, 6 बजे आई वाज नो मोर एज अ स्पेशल टीजीटी। अब मैं आपका सिर्फ प्रशांत पाटिल रहूंगा, और प्रशांत पाटिल लास्ट तक रहूंगा। आप मेरे दोस्त और भाई लोग रहेंगे, हम आगे और फिर मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय भारत, जय हिंद। कमालुद्दीन, ये लोगों ने देखा प्लेड इम्पोर्टेंट रोल इन माय लाइफ व्हेन आई वाज हियर फॉर 7 years।
Thank you very much for this. कमला आज मुझे बोली कि मैडम सर के जैसा हमको कोई नहीं मिलेगा, किसी ने आज तक हमको, हम काम करते पर कोई ऐसा हमको बुलाता नहीं फंक्शन, इसमें आप नहीं दिखे आओ. आज today she said it to me and sir called us by name. Where are they? Call them for photograph. So she said बहुत सारे ऑफिसर आके गए इधर, हम लोग सबका करते ही हैं, पर सर ने हमको नाम से बुला के किया, हमारे लिए बहुत मान का है. And really they are very kind, very devoted and very humble. बहुत मतलब कुछ लैंग्वेज का बैरियर कहाँ है वो पता नहीं है. मीन्स मुझे चाय चाहिए उबाली हुई, कम उबाली आई डोंट लाइक, बट शी अंडरस्टूड हाँ कि व्हाट विच टाइप ऑफ को कितना उबालना है, वो ये वो मैसेज दे देता है. But I'm really grateful to have them all. Thank you so much. Yeah, we will really miss you all. We never thought कि इतना attachment हैदराबाद से और आप लोगों से हो जाएगा. But you people are really very kind, very good at hearts, and be the same. Bless you all. Thank you. The Patil family who lives in Nagpur, okay, and many places, they were not able to come here right now, but I'll represent them. I have a message from them. Each word will represent what their feelings are for you. Okay. So, dear Prashant Bhau, we'll call him Prashant Bhau. He's not a special DG right now, right? But you are still Prashant Mama for me. Okay. So, dear Prashant Bhau, Prashant Mama, Prashant Kaka, okay. Congratulations on your next innings. After many years of hard work, dedication and countless achievements, you have earned this moment to kick back and enjoy life's next adventure. Okay? Your career as an officer has been nothing short of inspiring, and I am so proud of you. We as a family are so proud of you, of what you have accomplished. As I have seen your strength and commitment up close, and I know that this new chapter will be just as remarkable as the corporate career. Here's to your new hobbies, travels, and endless relaxation, also your health. Whatever makes your heart happy, you are there, you will achieve that. Okay, again, many congratulations for your achievements. Let's make it personal, right? Multiple people have said he is empowering, he has guided you, right? I'll tell you, he is an enabler. Okay, there is an incident, I'll give you an example. Our Baba's birthday was there. It was 88th birthday, a big moment for us. What Prashant Mama has done for me is he has asked me to plan this birthday party. He has guided me. He has not worked on it, but he was there to guide me and enable me with everything, like whatever help we need, whatever contacts we need. And due to that, we are able to learn and get the confidence to work on the team, on the works. Okay. Yeah. I don't want to be the person to only speak about Prashant Mama and skip Mami and leave their kids. Mami is a confidence giver. She looks at everything with a positive aspect. Let it be anything. I know Nidhitai said that I don't know when she'll become like Prashant Mama, but I can see some of the qualities of Prashant Mama in you. You are a good orator, you are a good explainer, you can guide us as well. Monu, you also have some qualities of Prashant Mama, right? You are the glue of our family, you are the glue of next generation. I can tell you that Prashant Mama is the glue of our family. He keeps our family together. And yeah, Monu, you have that capacity in you. Okay, you have that quality. Yep, with this, I will end my words. Thank you very much for your. But he's going to be at home doing something new, and we'll all have to deal with it. I don't know what course of education he's going to pick next, and I'll have to watch it and be like, "Ab mujhe bhi kuch karna padega." But I'm so excited. Whatever the next chapter you plan to do, we're all fully supportive. You want to take up dancing?
very happy to do so. If you all know, he's a very jolly person. सिर्फ काम नहीं होता है. Like if you see him outside of work, he's supremely funny. He loves enjoying, he loves dancing, he loves singing. So I think that is something that we can look to do in the next course of chapter. Okay, thank you so much. Thank you. रमेश राय बच्चन की कविता है. अमिताभ बच्चन को हम सब जानते हैं. उनके पिताजी का नाम हरवेश राय बच्चन है. He wrote this poem. तो आनंद कुमार तो समझेगा नहीं. नमी जरा समझ देना उसको मैं क्या बोलने वाला हूँ. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं. नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है. चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना न करता है. आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं. डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाती, खाली नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं. असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो. असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो. क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो. नींद चैन की तागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम. कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं. ये कविता है. You have to always do कोशिश. Efforts you have to put in your life. You are going to get your output. Yes, sir. Anna, sir. It is a both an honor and an emotional moment for me to deliver the word of thanks on this significant occasion. First of all, I would like to express my heartfelt gratitude to our special deity, sir, for gracing this occasion and accepting this small felicitation from APLSA Hyderabad. सर जैसा आपने अभी बोल रहा था, एमपीएनएल से जो आया है उनको मैंने बहुत बार एंगर से मतलब आपका एंगर जो है एक्सप्रेस किया है, क्योंकि वो लोग आए. सर हम जानते हैं सर आपको, मतलब जो भी आप एक्सप्रेस करते हैं लेकिन आप हार्ट से बहुत अच्छे हैं सर. इसलिए आप जो भी बोलने पर भी हम आपके पास आते हैं सर. एंड वेरी thank you sir for guiding us, for imbibing your knowledge into us, and thank you sir. And I would like to express my heartfelt gratitude to madam also. And मैं साहब का फादर को सैल्यूट करना चाहूँगा, क्योंकि वो मुंबई से यहाँ तक आया है एंड वो 8 बच्चों को ऐसा रेज किया है. उनमें 3 सिविल सर्वेंट बने हैं एंड कुछ लोग डॉक्टर्स बने हैं. एंड इतना अच्छा से बचपन से लेकर अभी तक उनको मतलब 8 बच्चों से सभी को मतलब कामयाब बनाना ये छोटी बात नहीं है. इसलिए मैं बहुत बहुत मतलब सैल्यूट करना चाहता हूँ एंड बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. वो वहां से यहाँ तक आके उनका मतलब एक्सप्रेशन मतलब जो भी है उन्होंने यहाँ एक्सप्रेस किया है एंड ये इवेंट को बहुत मेमोरेबल बनाया है. एंड मैं I would like to say a big thank to all family members, क्योंकि आप सभी लोग मुंबई से यहाँ तक आया है एंड ये साहब का ये मूवमेंट को बहुत मेमोरेबल बनाया है. एंड दिस इज द मेमोरेबल. ये बाबूजी विजय कुमार जी श्रीवास्तव जी, मैं बाबूजी देता के पापा, ये हट करके आए. मुझे आना है, कोई आने वाला है क्या तो उनसे चला जाऊंगा. मेरे पिताजी भी हट करके आए. They wanted to come, दोनों को they wanted to come. और कोई आने वाला है because he cannot travel, चले जाएंगे. तो ऐसे प्लान चल रहा था और गाँव में बहुत दिन से मेरे डैडी बोल रहे थे मैं आऊंगा, मेरा बेटा रिटायर होने वाला है. तो आई आल्सो अटेंडेड हिज रिटायरमेंट फंक्शन. अच्छा सर. When he retired as the general manager from the DIC Dhule, I came right from Vadodara to attend his function. Today it is really memorable कि मेरे दोनों पिताजी बाबूजी यहाँ पे आए और they are attending my function. I am so grateful to thankful to them. So thankful. Yes sir, it is a memorable moment to you also and for APLS also it is a very memorable moment sir. Actually बहुत बहुत धन्यवाद सर विजय कुमार श्रीवास्तव सर. आप मुंबई से यहाँ तक आकर ये इवेंट को बहुत मेमोरेबल बनाया है एंड सभी फैमिली मेंबर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. एंड ऑल ऑफिसर्स फ्रॉम MPNL एंड फ्रेंड्स ऑफ प्रशांत सर एंड ऑल सीनियर ऑफिसर्स ऑफ TOT BSNL, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देके ये Big round of applause please.
सेशन प्लीज, सब लोग खड़े हो जाएंगे।